Welcome everyone. This is the part 2 of Node.js Modules. In the part 1 we talked about कि भैया modules क्या होता है, कितने types के होते हैं, आप user defined या local modules कैसे बनाते हो, and then we started with the native or inbuilt modules. इस सेशन में, इस वीडियो में इसको आगे लेके जाएंगे, inbuilt modules के बारे में थोड़ा और जानेंगे, and then we also talk about what are the external modules and then what are the ES5 modules. So let's get started with the hands-on example. Perfect. I hope you are on the screen itself. चलिए चालू करते हैं. In the last video we talked about the file system. अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो मॉड्यूल का, it's very important. प्लीज आप जाइए वापस से वो वीडियो देख कर आइए. फाइल सिस्टम की जब भी बात होगी सर, तो what happens normally जो आपका Node.js है, that deals with the UTF-8 encoding. इस पे वो डील करता है. पर जब मान लीजिए अगर Node.js का जो आपका एप्लीकेशन है, it has to deal with the network IO और it has to deal with the binaries, तो वो कैसे डील करेगा? In order to deal with the binary numbers, the binary data, Node.js has something called as a buffers, right? They have something called as a buffer. I go and call it as buffers. Buffers are kind of a global object. Global object का मतलब ये है कि भैया इसको यूज करने के लिए अपने फाइल में I don't have to make use of a required keyword, मैं डायरेक्टली इसको यूज कर पाऊंगा. And mostly it is used for dealing with the binary data. Raw binary files को डील करने के लिए आप बफर यूज करोगे, right? बफर है क्या? बफर को अगर मैं डिफाइन करूँ, बेसिकली बफर का मतलब क्या होता है? इट्स एक्चुअली अ टेम्पोररी स्टोरेज एरिया. टेम्पोररी स्टोरेज area for the raw binary file. ठीक है, जब भी आपके पास बाइनरी स्ट्रीम ऑफ डेटा आ रहा है, उसको आप स्टोर करने के लिए एक टेम्पोररी स्टोरेज यूज करते हो, उसको आप कहते हो कि बफर्स. एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, लेट्स ट्राई टू सी एन एग्जांपल. सो लेट मी गो एंड कलेक्ट const. It has to be JavaScript file. Let me go and rename this .js. ठीक है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ बफर इक्वल्स टू बफर डॉट फ्रॉम एंड देन आई गो एंड पास हेलो हियर. ठीक है, बफर बीइंग अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट, आई एम एबल टू गो एंड गेट दिस बफर. और अब इस बफर को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ तो आपको दिखाई देगा इट इज इन द raw binary format. So if I go into this console.log buffer and if I print this node buffer and streams, you see that I get a buffer of the binary data. Now if I want to go and convert this buffer into the string, again that is doable. तो इंटर कन्वर्शन काफी आसान है. बफर को मैं बोलूंगा बफर डॉट टू स्ट्रिंग. देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज टू स्ट्रिंग ऑन इट. सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, देन विल गेट मी द हेलो इटसेल्फ. तो जो हेलो वर्ड है उसको मैंने बफर में कंप्लीट कर दिया है एंड देन आई विल टू प्रिंट इट. सो बफर इज अ टेम्पोररी स्टोरेज नॉर्मली यूज्ड टू डील विद द स्ट्रीम ऑफ द बाइनरी डेटा, राइट? इट्स अ टेम्पोररी स्टोरेज which is used for dealing with streams of binary data. The streams of binary data. Am I clear? Does it make sense? Is this point clear to everyone? Fair. Now let's try to have a situation where I want to go and deal with a huge amount of data. ठीक है, अब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एक ही बार अगर मैं रीड करने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि जो मेरा मेन मेमोरी है दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज. उतना ज्यादा स्पेस नहीं हुआ, आई विल नॉट बी एबल टू रीड इट. सो व्हेनेवर यू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइल विथ ह्यूज डेटा, ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा कोई फाइल है इसमें ह्यूज डेटा हो, उसको हम रीड करने के लिए क्या करते हैं? वी ट्राई टू रीड इट, रीड इन चंक्स, रीड स्लोली इन चंक्स. जब आप किसी फाइल को स्लोली रीड करते हो इन द चंक्स, ठीक है, तो मैं इसको कहता हूं कि यू आर रीडिंग लाइक अ स्ट्रीम. रीड स्ट्रीम, यू आर ट्राइंग टू रीड एज अ स्ट्रीम, राइट? स्लोली चंक्स में आएगा, एक ही बार पूरा नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, राइट? दिस इज वन
optimization. So in the case you are building a project, you have to deal with a huge file which has a huge amount of data. You have to read all of them. एक बार अगर आप रीड करने की कोशिश करोगे, स्केलेबिलिटी इशू हो सकता है कि जिस मेन मेमोरी में आपका एप्लीकेशन रन करो, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ स्पेस टू रीड ऑल द फाइल, बट आपको प्रोसेस करना है, तो आप क्या करोगे, पार्ट ऑफ द डेटा को लोगे, देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डेटा को लोगे. इसको हम कहते हैं चंक बाय चंक प्रोसेसिंग. एंड फॉर दैट यू गो एंड मेक यूज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अ रीड स्ट्रीम. हाउ डू वी डू इट? लेट्स ट्राई टू सी. तो अगेन इसके लिए हम फाइल सिस्टम मॉड्यूल को यूज करेंगे. लेट मी गो एंड कॉल इट एज const फाइल सिस्टम इक्वल्स टू रिक्वायर फाइल सिस्टम. फेयर इनफ, ठीक है ना, हमने ये कर लिया. उसके बाद हम बोलेंगे रीड स्ट्रीम. सो आई वांट से दैट const रीड स्ट्रीम, ठीक है, एंड देन आई गोइंग कॉल इट एज fs.create रीड स्ट्रीम. ठीक है, रीड स्ट्रीम में मुझे फाइल देना पड़ेगा. लेट मी गो एंड कॉल इट बिग फाइल डॉट txt. मान लो ये फाइल है, बिग फाइल डॉट txt इज द फाइल, ठीक है ना. और उसको हमने जब ले लिया, राइट, तो मैंने पहले ये रीड स्ट्रीम बनाया और उसको रीड स्ट्रीम पे मैं इसको रीड करने की कोशिश करूंगा. तो मैं इसको बोलूंगा रीड स्ट्रीम और मैं लिखूंगा ऑन, और मैं लिखूंगा जब भी इसमें डेटा मुझे जब तक मिलता रहे डेटा, तब तक उसको मैं प्रिंट करता रहूँगा चंक. तो वो चंक्स में ले लेके डेटा को रीड करेगा ना. तो आई कैन से दैट console.log and then I go and pass that received chunk and that should be equals to chunk. Okay, और जब भी वो end होगा तो I should go and emit a event call as end. So read stream and I go and say that on and there's another event call as end. और वहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा console.log and I go and say that no more data to read, no more data to read. सर अगर यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें हो क्या रहा है, ठीक है, मेरे पास एक बड़ा सा फाइल है, दिस इज अ ह्यूज फाइल कॉल्ड एज बिग फाइल डॉट टेक्स्ट. इसको एक बार में रीड करना डेंजरस है, तो मैं इसको चंक बाय चंक एज अ स्ट्रीम रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ. मैंने रीड स्ट्रीम बनाया, राइट. रीड स्ट्रीम जो है वो एक काइंड ऑफ अ मैसेजिंग सिस्टम को फॉलो करता है. इसको हम कहते हैं इवेंट बेस्ड लिसनिंग. तो जब तक डेटा है अवेलेबल उस फाइल में, जब भी वो एक बार डेटा रीड करेगा, एक चंक ऑफ डेटा को रीड करेगा, तो एक इवेंट ट्रिगर करेगा, इसका नाम है डेटा. और ये जो रीड स्ट्रीम है, इट विल कीप ऑन लुकिंग फॉर दैट डेटा इवेंट. इसको कहते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर. इसके बारे में और थोड़ी बातें करेंगे हम इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के बारे में. बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इवेंट एक एमिट हो रहा है और उसको हम ये लिसन कर रहे हैं. रीड स्ट्रीम इज लिसनिंग ऑन दिस इवेंट डेटा. सो जब तक डेटा जब वो रीड करेगा, वो एक इवेंट ट्रिगर करेगा डेटा और वो उसको लिसन करेगा. एंड इफ दैट हैपेंस इट से दैट वाज रिसीव्ड डेटा. जब सारा डेटा रीड हो चुका होगा, नो मोर डेटा हैज टू बी रिटन, नो मोर डेटा इज देयर टू बी रेड, तब एक इवेंट ट्रिगर होगा, उसको कहेंगे एंड. और जब भी ये रीड स्ट्रीम इस एंड को लिसन कर लेगा, वो कहेगा नो मोर डेटा टू रीड. नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट. इसके लिए मुझे सबसे पहले एक बिग फाइल डॉट txt बनाना पड़ेगा. तो लेट मी कम हियर एंड लेट मी गो एंड क्रिएट अ फाइल कॉल्ड एज बिग फाइल डॉट txt. परफेक्ट. और यहाँ पे कुछ मैं लिख देता हूँ, राइट. यहाँ पे एक बड़ा फाइल बनाने की कोशिश में करने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई टू गो एंड सेव दिस लाइक दिस. सेव and let's try to run this node and I go and call it as buffer and streams. Now as soon as I hear, what I read from this is that I have this received chunk and then this is buffer and then no more data to read. Why it is happening? For the obvious reasons. ये जो big file dot txt वो कहाँ पे है? वो हार्ड डिस्क में है. हार्ड डिस्क में बाय डिफॉल्ट डेटा किस में होता है? बाइट स्ट्रीम में. तो जब मैं इसको यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने आई हैव नॉट कन्वर्टेड इट टू स्ट्रिंग एंड सिंस आई एम नॉट कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग, दिस इज कमिंग मोर ऑफ लाइक अ बफर. इट इज कमिंग मोर ऑफ लाइक अ बफर इन द बाइट स्ट्रीम. तो अगर मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, कई सारे ऑप्शंस है मेरे पास. एक ऑप्शन ये है कि मैं इस चंक को कर दूं कन्वर्ट टू स्ट्रिंग. सो आई गो एंड से दैट chunk dot to string
एंड इफ आई गो एंड रन दिस नाउ, तो मुझे ये दिख रहा है कि सारे स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट हो गए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब ये मैं इसको स्ट्रीम बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूँ कि भैया यहाँ पे जो इनकोडिंग होगी, राइट, वो कौन सा है, वो UTF-8 होगा। सो आई गोइंग टू से दैट इनकोडिंग should be equals to UTF-8। ठीक है, if I go and save this and run it again, अगर मैं इसको फिर से रन कर दूं तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये फिर से ये स्ट्रिंग में ही आ गया है। तो दिस इज हाउ आई गो एंड मेक यूज ऑफ बफर्स एंड स्ट्रीम गाइज। ठीक है, नाउ इसमें हमने एक इवेंट के बारे में बातें करी है, तो चलिए एक बार इवेंट कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ लर्न इवेंट्स .js। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं अपन यहाँ पे। अब लर्न इवेंट .js में पहले इवेंट क्या है पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, there is something called as there are two ways of communication। ठीक है ना, the first way of the communication could be direct, or I go and call it as a blocking। ठीक है, so what will happen in that case, let's say that there is an application 1 A1 and there is an application A2 A3 A4 A5 A6। let's say that A1 has to interact with A2 A4 and A6। in the blocking way of communication, what will happen, A1 will directly connect with A2, maybe through some APIs, maybe through some kind of direct connection, but A1 will directly connect to A2 A4 and A6, right? It could be a function call, it could be an API call, but it is all direct call, right? This is a conventional way of doing things. There is another way through which two applications can interact. That typically is called as a event driven way. That typically is called as a event driven way. Now what will happen in the event driven way? In this way, there is an application called A1 and he will say that, boss, I'm gonna launch an event which is titled E. Okay. Now all these applications A2 A3 A4 A5 A6, they all will be listening for certain events, listening for events। ठीक है ना, मान लो इसमें से A2 जो है वो E events को खोज रहा है, A4 is also listening for the E event, right? A6 is also happening for the E event। तो जैसे ही वो लिसन करे, जैसे ही इवेंट आया, this will automatically come to A2 A4 and A6। A1 is not directly sending the event, but only if A2 A4 and A6 is subscribed or is waiting for that event, they will get to see that, they get to see that। That's typically is how the event driven way works। अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड एनालॉजी दूं, ठीक है ना, तो मान लीजिए, ठीक है, आजकल क्या होता है नॉर्मली इन द हाई लेवल सोसाइटीज, राइट, the guy who brings milk, let's say the guy who brings milk, there are different types of milk and different quantities also, right? So every house 1 house 2 house 3 house 4 house 5, they would have taken subscription from this guy, and on the door they will always put some kind of ticket T1, then there's a ticket T2, then here is a ticket of type T1 itself. So depending on what the ticket is, the milk gets subscribed to all these out. So this is also a kind of a event driven architecture itself. So in order to have a more asynchronous, more scalable and more dynamic system, we have something called as event-based interactions. Node.js kind of support that, and for that we have the event listeners inbuilt defined. What are those? Let's try to talk about it. So the event module creates a class called as an event emitter. How it does is that, let me go and call it as an event module. We go and call it as const event emitter, and we can call it as a require, and we can pass it as events। ठीक है, now ये जो event emitter है, this can be used for creating events
This could be used for listening to an event, and this can even be used for handling the events. Handling, तीनों ही चीजों के लिए आप इस इवेंट एमिटर को आप यूज कर सकते हो, फॉर क्रिएटिंग द इवेंट, फॉर लिसनिंग टू द इवेंट्स, एंड फॉर आल्सो द handling of the events. So first of all, let's go and create the event emitter instance. Create an emitter instance. Create an emitter instance. Okay. Equals to the const emitter equals to new event emitter. Fair enough. ठीक है, हमने नया event emitter बना लिया. Now once I have done, I need to attach an event listener to this. Now this event listener could be a code, could be a function, could be another application altogether. We want to say that emitter dot on. ठीक है, और मैं कह रहा हूँ अगर कोई ऐसा इवेंट है जिसका नाम है greet, in that case you take a name as an argument, will you pass to it, and you go and greet that name. So you go and say that console.log, and you go and say that hello, and then you go and pass name, right? So what is an event listener to this on the greet event, right? And now I need to go and actually emit the event, right? Just to check this up, if this works, I'll have to actually emit the event. To emit the event, I go and say that emitter dot emit, and then I go and pass greet, and then I go and pass, let's say that I want to greet myself with short self. So I go and run this. We're going to call it as a node learn events.js. तो क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ पे हमने यहाँ पे इवेंट एमिटर बनाया क्लास, इवेंट एमिटर से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एमिटर, जिससे कि हम लोग इवेंट यहाँ पे एमिट कर रहे हैं. कैसे एमिट कर रहे हैं, मैंने बोला एमिटर ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन कॉल कर दिया एमिट, जिसमें हमने पास किया दिस इज द इवेंट नेम and this is the message, right? Now since there is a emitter which is listening on this event greet, since ये evoke हुआ था, तो ये जो callback function है it gets triggered and that prints hello Vishwa. तो इस तरीके से भैया जावा में there is a very good support for the event driven mechanisms. We can take this as a base, and then as we make progress, build application, we'll go and talk about that how this event thing can come into action into the code base. Perfect. So with this we have kind of covered the different types of the basic inbuilt modules. You have got an idea, you have got a feel that how to use it, how to make the most out of these modules. In the case when you start building applications, you need more help, you can go back to the documentation, see what all modules are there, and there's a very high chance that most of the thing that you want to do, that's already there. Perfect. So now we have seen two types of the modules. The first one was local modules, then we talk about the inbuilt modules. The third type of the module that we have is called as an external modules. ये क्या है भैया, अब क्या है सर, Node.js की दुनिया में it's not a new framework, it's one of the very vibrant framework in the world right now. तो क्या है, जब आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, there might be many things which others would also have encountered in the past. तो जो कुछ अच्छे डेवलपर्स होते हैं, उन्होंने जो अपना कोड बनाया and they feel that people can use it, they go and convert that into the module and they export it for the world to use, right? तो Node.js का एक central repository है which is called as npm repository, और मान लीजिए मैंने कुछ अच्छा कोड लिखा है and I feel that other people might be benefited from that, तो मैं क्या करूँगा, अपने कोड को एज अ मॉड्यूल बनाकर मैं npm central repository में डाल दूंगा. Now anyone who wants to build a Node.js project in an app, they can use the external modules. So external modules are the reusable code which other people would have built for their project, but they have now converted it in the form of a modules so that we can go and leverage that in our project as well. That's typically called as an external modules. And in order to make use of the external modules, what we can do is that we can rely on npm, which goes and look up for the modules in the central repository. I use a command called as install, and let me go and make use of an external module called as express, which we're gonna cover in the coming classes.
So when I go and say the npm install express, what it does is that from your local machine over network, it tries to go and search the central node.js repository. It's a remote repository. Now here, anyone who is really competent, he builds some, let's say this guy built something called as an express module. So he exported that and made it available under the express. Now when I wrote this command called as npm install express, it went to this, took the express, brought back and stored inside this project structure of my node.js project. This is what the external module is, and this is how it's loaded. Let's try to see with the help of a hands-on example itself. So I go and open my code, और यहाँ पे अगर मैं एक फाइल मान लो बना देता हूँ app.js, ये जो मैंने बनाया था उसको मैं एक बार कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है. Now I want an external module, right? So for that what I do, I go and call it as npm install express is the name of the external module. As soon as I do it, आप अगर नीचे में ध्यान से देखोगे यहाँ पे, if you want to see with the complete focus in the downward direction, I have done this npm install express, and then it said added 67 packages and audited 68 packages in 1 second, blah blah blah. To run this, you need to have an internet connection. And what has happened? I am on my laptop. In my laptop, I have a project called as a backend. Inside this, I have something called as a learning modules. तो यहाँ पे वो कुछ है. यहाँ से it has made a call using the internet connection. It has went to the node.js central repo. In this central repo, it has went ahead and searched for express. It has got the express and also all the dependencies of the express dependencies. It has got the express and also all the dependencies of the express back to my laptop in this folder location, where it is all stored. Now as soon as I did npm install, if you see here, there's something called as node_modules gets created. As soon as I do it, few changes happen. I got a new folder structure called as node_modules, and inside this node_modules, if I go and open it up, I'll find there's a folder for express, which is here, right? There's a folder for the express. But apart from that, so many other 50 plus dependencies are added up. Why? Because to get the express, these are the other dependencies which are also needed. So node npm is very smart. It not only brings the main dependency, but also the transitive dependencies also is brought in together. So this is one change that has happened. Also now, since package.json contains all the metadata, if you go and open this package.json, you'll find that now this code has an external dependency of express, which you see here, and this is the version, right? So this is being done by the npm itself. Now since I have this external dependency of express, how do I make use of it? We'll see it more often in the coming classes, but let's try to see how do I use it. So I can just over that const express, and I say that require, and I go and pass express. Whenever I go and run require express, typically what it normally tries to do, it normally tries to go and check in the node_modules folder. If it is not present, then it tries to go and check in the file system, and also it tries to go and check into the node installation directory. Am I clear? Does it make sense? So this is how you go and make use of the external modules, and these are the external modules in the world of Node.js. Cool. So now we have to talk about the fourth type of the module, which is called as ES modules. ES module. ES module is not a type of a module. It's basically a module system itself. Module system itself, which is a part of the newer JavaScript ecosystem. Now, in order to enable the ES module, it's not enabled by default, right? There are two ways of doing it.
The first way of doing it is that those files which you want to go and get converted into the ES module, or you want to use at a ES module, they had to have the extension of MJS. ES module should have an extension of .mjs instead of .js. This is one way of doing it. Or the second way of doing it is that in your package.json itself, you go and put a setting in your package.json itself. You go and put a setting where you go and say that type is equals to module. Type is equals to module. If you are able to do this, then also the entire project becomes equals to the ES module column applied. Now let's try to see both of them one after the another. So let me go and open my code. Okay. I'll be go and create a file called as learn. Let's say that es module.js. Now it cannot be a .js file because by default JS is common JS compliant, so I'll have to go and call it as, instead of .js, I'll have to go and call it as mjs. Okay. And now what I do, let me go and close all the other files that is open right now. Okay. Is module.js. And now let's say that I want to go and define few functions like function add a comma b, return a plus b, and then I have something called as a function multiply, and let's say that a comma b, and then I'm returning a into b. Okay, I have a function add and I have a function multiply, and this is how I go and return it. And I want to go and export it. To export this in the ES world, what we do is that we just go and use a keyword here called as export. I go and say that export. You will see that this is slightly different how we do it in the common JS, right? Here I can just say that export function, export keyword, and I'm able to go and export these two functions. Now since this is a ES module, let's try to see that how do I go and make use of it, how do I go and read it. So I go back to my app.js class. If I go to the app.js class, and in this app.js class, what I do now is that let me go and comment this, and let me go and say that import, and then I go and say that add, and I go and say that multiply from, and then I go and say that dot as module.mjs, right? And then I go and console.log add 5,6, and then I go and say the console.log, and I go and say the multiply 5,6. ठीक है सर. अगर इसको रन करने की हम कोशिश करें अब node app.js, तो I'm seeing there's some error. What is that error? Let's try to see that up. कह रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो, and that's why reading the console log is very very important all the time. ये कह रहा है बॉस कि जब मैंने इसको रन करने की कोशिश करी node app.js to load an ES module, set type module in the package.json, ये मैंने सेट नहीं किया हुआ है, और यूजर mod.mjs एक्सटेंशन. ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी ES मॉड्यूल है, उसको आप किसी फाइल में यूज करना चाहते हो, या तो आप पूरे प्रोजेक्ट को बता दो कि मैं ES मॉड्यूल यूज करने वाला हूं, और वहां पे आप टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल इन package.json आप लिख देते हो, या तो फिर आप .mjs एक्सटेंशन आपको यूज करना पड़ेगा फाइल में. तो अगर मैं इस app.js में भी अगर इसको यूज करना चाहता हूं, तो मैं इस .js को चेंज करके करना पड़ेगा app.mjs. एक बार कर लेते हैं एंड देखते हैं if it works. So now what I do is that I go and remove this as rename and I make it as mjs. सेव कर लेते हैं इसको, right? And let's try to read now node app.mjs and see that I have got the answer as 1130.
So one way of using the ES convention is that you will have to have the files with the suffix changed to .mjs instead of mjs. This is one way of doing it. Another way of doing is that आप इसको js ही रहने दीजिए दोस्त. Let's keep it as js itself. इसको मैं js रहने देता हूँ. Rename it and make it js. Save कर दो. And this app.js also. No. Yes. And yes. And what you do is that app.js को भी आप rename करके आप कर दो js itself. ठीक है. पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक बार package.json में आइए अपने, और package.json में आने के बाद आपको यहाँ पे type equals to module करना पड़ेगा. So you come here and call it as type equals to module. ठीक है. जैसे आपने type equals to module करो और इसको सेव कर दिया, and if you now go and run this node app.js, then also it will work perfectly fine. So this is how, if I want to make of ES conventions of or ES way of handling the module, this is the changes that I'll have to go and do. So with this भैया पूरा module हमारा complete हो चुका है, हमने सारे combinations देख लिए हैं, and I hope we all are super confident and comfortable in using and learning modules in the Node.js world. Perfect. So sir, with this we have come to the end of this video. This video and the last one. पिछले दो वीडियो में हमने पूरा का पूरा जो Node.js की दुनिया में मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है उसको हमने पूरा करा है, उसको हमने समझा है, हैंड्स ऑन एग्जांपल से देखा है. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, this is the time, go back, watch it. And now I think we are all set to move on to the next topics of Node.js. तो अब डेवलपमेंट की चीजें करेंगे, उसके अराउंड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. REST APIs क्या है, कैसे बनाते हैं. Stay tuned in for the next video and keep on telling in the comments कि आपको कैसा लग रहा है कंटेंट. आपका एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा सेंटेंस, थोड़ा सा मोटिवेशन, it allows me and gives me the entire hope to bring more and more videos and content. इस साल जब एक साल ऑलमोस्ट एमर्स को पूरा होने वाला है, I am all set to provide lot of contents all for free for this entire community. The only thing that I expect in return is a little motivation and your pump up for me so that I keep on going and running at a very fast pace. I'll see you guys in the next video. Till then, savor the love in the comments. I'll see and read each one of your comments. Thank you.